Good afternoon, everyone. Hope my voice is audible. Tina, can you confirm my voice is audible? Yes, it is audible. Thank you for the same. So, good afternoon, everyone. Welcome and thank you for joining today's webinar. Now, my name is Avinash Agarwal and I'll be your presenter for the entire session today. सो हम इस सेशन को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिक्स में रखेंगे बिकॉज हमारे पास जो आज अटेंडीज हैं मैं देख पा रहा हूँ कि हर रीजन से आए हैं सो विल बी कीपिंग दिस सेशन टू हिंदी एंड इंग्लिश बोथ अ मिक्स ऑफ बोथ बेसिकली so let me introduce myself. Like my name is Avinash Agarwal, as I said, and I work as senior product trainer at IFANOW, and I'm responsible for all trainings to IFAs, wealth managers, or advisors for the products. So मैं सारे products के जो भी ग्रोथ प्लस के अंडर हैं इनके रिगार्डिंग या फिर हमारा जो पोर्टल है इसके रिगार्डिंग भी जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं आईएफएस को वेल्थ मैनेजर्स को या एडवाइजर्स को सो वन टू वन हो या वेबिनार के थ्रू सो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहाइंड इट. Now, we have about 90 minutes together, and I want to make every minute count. So let's set some rules before starting with the same. Uh, so you can all use the Q&A box, the chat box. The chat is monitored by my team. आप जो भी questions होंगे आपको आप सारे questions आपके chat box में paste कर सकते हैं. मेरी टीम देख रही है उसको आंसर करने के लिए क्योंकि हमें एक फ्लो रखना है इसका और बहुत सारी चीजें आज कवर करनी है क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट नहीं है हम एक पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं आज और कैसे आप अपने प्रैक्टिस को फिक्स इनकम जो कैटेगरी एसेट क्लास है उसके रिगार्डिंग कैसे बेहतर बना सकते हैं और हम बीच बीच में कुछ पोल्स पूछेंगे कुछ सर्वेज होंगे तो आप जो भी रिस्पॉन्सेज देते हैं वो सारे अनोनिमस होंगे दे विल बी ऑल बी अनोनिमस सो आंसर ऑनेस्टली because they will shape our conversation. So let's begin with a quick poll to understand where the room is today. So this is the first poll. Please answer honestly because this will shape for today's conversation. आज की जो हमारी बातचीत होगी इसको एक थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे थ्रू चैट बॉक्स और थ्रू पोल्स सो प्लीज आंसर ऑनेस्टली. Okay, so last 10 seconds, please answer the poll. Okay, so let's see the results of the polls. Okay, so हमारा क्वेश्चन ये था कि what forms the largest share of your clients' fixed income allocation today? So I can see most of the people, like 42% of the advisors today who are attending this session have answered debt mutual funds, whether it's a liquid or short duration. And 33% have answered bank FDs, which is the second number. So in most webinars which I have taken, most advisor webinars which I have taken for this particular topic, fixed income, the new age of fixed income, I have seen that 70 to 80% of the room picks up bank FDs and debt mutual funds altogether. Because this is why this is exactly the situation we are here to change today. And I can see some of the people have chosen alternative fixed income, which is invoice discounting, real estate NCDs, insurance buyout. So you are already ahead and stay with us. You will see why to go deeper. Now let me present my screen before I start with the more details. I hope my screen is visible. Jigna, can you confirm? Yes, it is. Okay, thank you for the same. Okay, so this is the series finale for our fixed income category, which is fixed income 2.0, which is say. So now let's see the fixed income investor. Who are they, and why it matters to you as an advisor, or why it matters to them? So who relies on most on fixed income, and why?
before we talk numbers, I want to spend 2 minutes on something that gets overlooked. बहुत सारे वेबिनार्स में हमने प्रोडक्ट वेबिनार्स भी किए हैं या फिर मेरी बातचीत होती रहती है आईएफएस के साथ में या वेल्थ मैनेजर के साथ में। मैंने देखा है कि जो एक चीज है, जो एक बेसिकली स्टेक होल्डर है जो पीछे ओवरलुक हो जाता है कभी भी पोर्टफोलियो के, ह्यूमन, जिसका पोर्टफोलियो है वही मेन इंसान है। हम हमेशा पोर्टफोलियो का बेंचमार्क से कंपैरिजन, पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, पोर्टफोलियो कैसे अल्फा जनरेट करेगा, फिक्स इनकम कैटेगरी है तो सेफ कितना है, कितना रिस्क है, कितने क्या टेन्योर है, बहुत सारी चीजों में बात करते हैं। बट जो उसके पीछे ह्यूमन है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे आज। सो थिंक अबाउट योर मोस्ट कंजर्वेटिव क्लाइंट. Maybe it's someone who retired last year. Maybe it's a widow managing her late husband's life savings. Maybe it's a first generation wealth creator who built everything from scratch and cannot afford to lose any of it. So for these investors, fixed income is not just an asset class. उनके लिए फिक्स इनकम एक एसेट क्लास नहीं है। इनके लिए इनका मंथली ग्रोसरी बजट हो सकता है, उनके मेडिकल कंटिजेंसी फंड हो सकते हैं, उनके बच्चों की वेडिंग कॉर्पस हो सकती है जो वो बचा रहे थे अपने बच्चों की शादी के लिए, their dignity, their independence in old age. So all these things matters. So they choose fixed income not because they don't understand risk. ऐसा नहीं है कि उन्हें रिस्क नहीं पसंद या रिस्क नहीं पता, बट दे अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस। उन्हें पता है कि अगर मैं फिक्स इनकम की जगह पे इक्विटी में जाऊंगा या हाइब्रिड में जाऊंगा, वहां मेरा कैपिटल इरोड हो सकती है। इस वजह से वो फिक्स इनकम कैटेगरी चूज करते हैं। So they understand the consequences of loss, and they understand that the consequence of loss is not just financial, it's irreversible. वो वापस पैसा नहीं आएगा। हम कहते हैं ना, आज इक्विटी में अगर हम कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर रहा है, सपोज कीजिए कि उसकी मार्केट, उसकी कैपिटल 50% इरोड हो गई, 50 उससे वो 50% रिकवर करने के लिए 200% कमाना पड़ेगा। सो वही बात है, तो इसलिए फिक्स इनकम कैटेगरी के में लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका रिस्क नहीं रहे, रिटर्न सिक्योर रहे, और ये सारी चीजें हैं। सो when we talk about fixed income products today, we are not discussing portfolio theory. We are discussing real people's real security. Let's treat it that way. So there are three investor profiles where fixed income is non-negotiable. Now, profile one is the retiree. The retiree is one person who has no salary. Their portfolio is their income, and every unit of capital lost cannot be recovered by earning more. Their number one requirement is predictability. Profile two is the conservative accumulator, earns well, but इक्विटी मार्केट उन्हें एंजाइटी देती है। इक्विटी मार्केट का जो भी ऊपर नीचे होगा, उन्हें वो जेन्युइन एंजाइटी हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि 6% गारंटी रिटर्न से इसके साथ में नींद आ जाएगी, 12% अनसर्टन क्यों रहना है इक्विटी में डाल के। सो दे स्लीप बेटर विद 6% गारंटेड रिटर्न देन विद 12% अनसर्टन। देयर नंबर वन रिक्वायरमेंट इज सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स even at a lower number. So profile 3, now we go to the profile 3, which is the goal based investor. They have a defined need of 1 to 5 years, maybe child's education, property purchase, medical corpus. So they cannot risk a drawdown that delays the goal. Their number one requirement is capital protection with a defined return. All three of these investors are being failed by traditional fixed income in currently. Let me show you how exactly, and let me show you what we can do about it. How traditional fixed income fails them? One, FD return is losing to inflation. Why? Because now this is before even tax enters the picture. Get it? So टैक्स आने से पहले पिक्चर में इन्फ्लेशन से वो लूज कर रहे हैं। आज हम जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं कंट्री की, उस बेसिस पे जो एफडी के रिटर्न्स हैं, बैंक एफडीज की बात करूं मैं तो 5 से 6%, 7%। कॉर्पोरेट एफडीज की बात करूं तो अब तो और भी कम हो गए हैं। कल 8% थे, आज तो और भी कम हो गए। तो इन्फ्लेशन से ही बीट नहीं कर पा रहे हैं एफडी रिटर्न्स, तो टैक्स आएगा तो फिर बहुत ही कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स हर एक कस्टमर को लगेगा, हर एक क्लाइंट को लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड है। बट स्टिल जो हमारे एच एन आई क्लाइंट्स हैं या फिर जो मीडियम मिड इनकम वाले क्लाइंट्स हैं, उनको ये मैटर करता है। जहाँ 10% भी है वहां पे मैटर करता है। तो ये सारी चीजें भी है। सेकेंड इज डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स का एक टाइम था जब वो टैक्स एडवांटेज रखते थे, क्योंकि द
2023 Finance Act has removed the indexation benefits for new investments in debt mutual funds. So regardless of its holding period. So that's the reason that gains are now taxed at the slab rate, the same as FD interest. So the key reason debt mutual funds are preferred over FDs because LTCG with indexation tha, and it has been largely removed. So making the after tax differentiation much smaller than it once was. So इसलिए डेट म्यूचुअल फंड भी वहां पे भी अब बीट नहीं कर पा रहे हैं इन्वेस्टर्स. और थर्ड है कि जीसेक और लिक्विड फंड्स. जीसेक लिक्विड फंड्स दे आर सेफ बट अगेन दे आर नॉट सफिशिएंट. इन्फ्लेशन को वो बीट नहीं कर पा रहे हैं. तो ये सारी चीजें भी हैं. नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन हो गया, री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लिमिटेड टैक्स एफिशिएंसी हो गया, इनसफिशिएंट यील्ड हो गए, तो ये सारे काफी सारे इश्यूज हैं जो ट्रेडिशनल फिक्स इनकम बीट नहीं कर पा रहे थे. अब आप कहेंगे कि फिक्स इनकम में इससे बेटर क्या है काफी सारी चीजें हैं जो हम काफी सारे एडवाइजर्स को नहीं पता होता है या फिर क्लाइंट्स को नहीं पता होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आता. बट स्टिल वही मिथ को आज हम ब्रेक करने के लिए यहाँ पे है. So let me introduce you to products. Now there are three products basically which we are going to cover today, which are new age fixed income products. One is invoice discounting, second is insurance buyout, and third is real estate NCD. They are all fixed income products, but yes, they are beating FD returns also. So we'll go one by one. पहले हम invoice discounting लेंगे, उसके बाद में उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम कवर कर लेंगे. उसके बाद में इंश्योरेंस बायआउट, उसके क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे प्रोडक्ट कवर करने के बाद. इसके बाद रियल एस्टेट एनसीडी. आई एम सॉरी. सो लेट मी जस्ट शेयर द इनवॉइस डिस्काउंटिंग. हर एक प्रोडक्ट के पीछे हम मैक्सिमम 25-20 मिनट्स लेंगे एंड उसके Q&As ले लेंगे 5-10 मिनट, ताकि सब अलाइंड रहे. और क्योंकि काफी सारी चीजें आज कवर करनी है, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, इसके बाद में हम आईएफए नाउ में कैसे चीजें बदल रहे हैं रिगार्डिंग टेक हो गया या थ्रू ग्रोथ प्लस जो हमारा इनिशिएटिव है उसके थ्रू, तो काफी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज. पहले इनवॉइस डिस्काउंटिंग. नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट दिस थिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को पता होगा, बिकॉज हमने देखा है कि एक सिंपल टर्म है बिल डिस्काउंटिंग, उससे ही लिंक है ये. नाउ लेट मी गेट इनटू इट. सो व्हाट इज एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या है सिंपल लेमैन टर्म्स में, इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज अ वेरी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. इन बैंकिंग टर्म्स दे कॉल दिस बिल डिस्काउंटिंग. बिल डिस्काउंटिंग के नाम से बहुत फेमस है इनवॉइस डिस्काउंटिंग. कैसे वर्क करता है? सपोज कीजिए देयर इज अ सेलर and the seller is selling goods to a larger company, let's say company A. Now this large company, the buyer, works on a credit cycle of 30 or let's say 60 days or 90 days to make the payment back to the supplier. Now in this case a lot of time the supplier faces liquidity issues. Obviously supplier के को भी पैसा चाहिए क्योंकि उसे अपने ऑपरेशनल्स है, सैलरीज देनी है लोगों को, रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट है, तो वो सब खर्चे चलाने हैं. तो ऑपरेशनल लिक्विडिटी एक प्रॉब्लम हो जाती है इन सप्लायर्स के लिए ना. इस केस में ये क्या करते हैं, इस सिनेरियो में दे टिपिकली अप्रोच अ बैंक और एनबीएफसी and who will lend to the suppliers against the unpaid invoices, and on the day of maturity when the buyer pays back to the lender, which is the bank or the NBFC in full. ये एक सिंपल वर्ड में इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो गया, जहां पे एक बायर है, एक सेलर है. सेलर ने अपने गुड्स बायर को बेचे हैं क्योंकि क्रेडिट साइकिल उसे मिलता है 30 डेज, 90 डेज, सो ऑन. तो वो क्रेडिट के बाद पैसा देगा. अनपेड इनवॉइस है, बायर से पैसा आने वाला है, उस इनवॉइस के अगेंस्ट वो एनबीएफसी या बैंक से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं बेसिकली, ताकि उनके जो लिक्विडिटी इश्यूज हैं वो चलते रहे. ऑब्वियसली वो डिस्काउंट पे एक पैसा मिलता है उन्हें, क्योंकि उन्हें जल्दी पैसा मिल रहा है उस हिसाब से. नाउ so it is a short-term working capital financing. It is linked to real transactions and it is self-liquidating nature. Now we have a tie-up with a manufacturer named Amplio. Now where does Amplio come in? So Amplio is primarily a fintech platform which is providing the visibility for these investment products. But on the back end, they are an NBFC. Their NBFC name is Ganga-based Barter Private Limited. So the NBFC is mainly in the business of supply chain financing. They lend to suppliers against their unpaid invoices. Over time, as this portfolio grow, they don't just keep all of these loans on the book. They convert these loans so that they have given out to the suppliers into an investment opportunity. They offload it to investors, and with the money raised back,
दे लेंड अगेन. सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. क्योंकि उनके पास पैसा है, वो उसी लोन को आगे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के थ्रू, जैसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग ये प्रोडक्ट है उसके थ्रू इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, और ताकि वो जो वापस पैसा आए उससे और भी दूसरा फंडिंग कर सके. So in this process, they are converting these loans into something known as pass-through certificate. Now PTC आपने सुना होगा, PTC यूनिट में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है इस लोन्स को. और and in this process, the investors can buy a portion of this loan by buying this units of a PTC, and they can earn up to 11 to 12% fixed returns, which are fully backed by insurance. I'll also be speaking about insurance later in my slide. Now, how does a PTC work? What is a PTC and how does it work? Pass to आपने सुना होगा, पास थ्रू सर्टिफिकेट कहते हैं. टू सिंप्लीफाई दिस, थिंक ऑफ अ लोन एज अ केक. एक लोन लोन को आप समझ लीजिए कि केक है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में उसको कट कर दिया गया है. अब जो भी इन्वेस्टर को एक स्लाइस बाय करनी है इस लोन की, वो एक स्लाइस बाय करेगा, इस मतलब एक केक की स्लाइस बाय कर रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट इनटू बिल डिस्काउंटिंग. एंड व्हेनेवर द रीपेमेंट इज coming back from the buyer, it will be passed on to these investors in the form of amount of slices they have bought. So if someone is buying one slice, principal and interest will be passed on for one. Someone buying five, it will be passed on for five. So they are just breaking down the loan into units and downselling it to investors. How it works? An RBI regulated NBFC originates the loan. They give out these loans to the suppliers. The loan is then securitized. It is assigned to a special purpose vehicle. Now, this special purpose vehicle is a trust. It is formed and managed by SEBI registered trustees. In India, there are 12 SEBI registered trustees. I guess they're working with. So they work with Beacon, they work with Vistra, Catalyst, and Midcon credentials. So the loan is offloaded from the NBFC's book and is assigned to the special purpose vehicle. तो जो लोन है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू ऑफलोड किया जाता है एनबीएफसी के बुक से, और असाइन कर दिया जाता है कस्टम इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए. नाउ दिस प्रोसेस फॉलोज आरबीआई गाइडलाइंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स. आरबीआई की एक गाइडलाइंस है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स. इसका मतलब ये है, ये गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू करी थी, और ये कहती है कि दो एंटिटीज, एक बैंक या फिर एक एनबीएफसी, जो भी उनके लोन है उनके बुक्स पे, they can securitize it by assigning to a special purpose vehicle, convert it to units and downsell it to investors. So suppose a 5 crore loan is given out to a supplier. They will assign this loan to a SPV. The SPV will issue 500 units of the pass-through certificate against the 5 crore underlying loan. That makes the value per unit of 1 lakh rupees, which becomes the face value per investment. Now, this PTC's units are listed on Crestford's platform, Crestford Technology Private Limited, which is basically Amplio. And investors can buy these units from the Amplio platform directly or through your from the distributors. Now, once they buy these units, they receive the delivery in the form of DMAT and non-DMAT. So बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स हैं एम्प्लियो के पास में ये यूनिट्स ट्रांसफर करने के लिए. अगर कस्टमर कहेंगे डीमैट में तो डीमैट में, या फिर नॉन डीमैट में. And then investors can track their portfolio value, the investment payout structure, and everything in their portfolio section from the Amplio app directly. तो काफी ट्रांसपेरेंट इनका पूरा प्रोसेस है. सारा कुछ उनको कस्टमर्स को अपने लॉगिन में ही दिख जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट पे आउट स्ट्रक्चर है, क्या पोर्टफोलियो वैल्यू है, कब उनका टेन्योर खत्म होगा. तो जनरली इसमें कैसे है कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज के लिए ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं. पीटीसी जो होता है वो टोटल 2.5 ईयर्स का होता है. उसमें से कस्टमर के ऊपर है कि वो कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं. राइट नाउ इन दिस एंटायर बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ड्यू डिलिजेंस. सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये अब तक चल रही होगी कि ड्यू डिलिजेंस की बात नहीं करी अविनाश ने. तो यस, हाउ दे आर सिलेक्टिंग विद सप्लायर टू वर्क विद एंड विद सप्लायर टू नॉट वर्क विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज कोई भी कंपनी बिल लेके चली जाएगी कि मुझे ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग कराना है, आप फंड कर दो, और फिर एम्प्लियो उस पैसे को इन्वेस्टर से फंडिंग करा लेगा. इट इज नॉट द केस. ऐसे नहीं करते हैं वो. इसका काफी अच्छा एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस उन्होंने बनाया है. So they do not finance every supplier who approaches them. Any supplier approaching them has to go through a strict 3 step ड्यू डिलिजेंस. 3 स्टेप का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है उनका. उसके पहले, उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि उनको काम करना है उस सप्लायर और वायर के साथ में कि नहीं करना है. और
जो भी क्राइटेरिया है अंडर राइटिंग के या ड्यू डिलिजेंस के, वो उनकी इंश्योरेंस कंपनी यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस, आप सबने नाम सुना होगा इस कंपनी का, इसने सेट किया है। सो मैंने जैसे पहले कहा था कि इंश्योरेंस बैक्ड है ये प्रोडक्ट, तो यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस इज द कंपनी विच इज द हैंडलिंग द इंश्योरेंस फॉर दिस प्रोडक्ट। एंड उनके ड्यू डिलिजेंस के स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। नाउ यूनिवर्सल सॉम्पो पूरे एंटायर स्ट्रक्चर जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है इनके, उसको एक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के जैसे देख रहे, और उसके बाद में उन्होंने उसको इंश्योर किया है। सो द फर्स्ट स्टेप फाइनेंशियल और बैकग्राउंड एनालिसिस होता है। दे हैव अ क्रेडिट एनालिसिस टीम in house who go through the GSTR reports, their bank statements, their audited financial statements, their cash flow patterns, सारी कुछ चीजें देखी जाती है। They also check specific criteria like any supplier approaching them, like the buyer should be a minimum 500 crore turnover company। जैसे कोई भी बिजनेस ने कहा कि छोटे मोटे बायर को ले लेंगे, नहीं, 500 करोड़ टर्नओवर कंपनी होनी चाहिए, वरना वो वर्क नहीं करते उनके साथ में, दे रिजेक्ट देम। आप जनरली अगर देखोगे एम्प्लो के पास बड़े बड़े नाम हैं। देखिए ये बड़े बड़े नाम है, टाटा ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, बैंक या फिर जैसे एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दीज आर द डील्स दैट आर करंटली लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म। द सप्लायर मस्ट हैव अ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, मीनिंग इट्स नॉट लाइक ओनली ही इज ओनली वर्किंग विद टाटा मोटर्स। क्योंकि कैसा है ना कि एक ही बायर पे अगर रिलाई करेगा सप्लायर अपने एंटायर टर्नओवर के लिए, वो एक रेड फ्लैग है उनके लिए। क्योंकि अगर एक बायर उठ गया तो कंपनी बंद हो जाएगी सेलर की, तो वो एक रेड फ्लैग है उनके लिए। Now, suppliers should have a diversified base of buyers. They must have been in a primary business for at least 5 years. Supplier and the buyer should have a history of at least 2 years of working together. इट्स नॉट लाइक कि टुडे आज भी ना आज वो स्टार्ट कर रहा है सप्लाई और एक ब्लू चिप कंपनी को, और वो अप्रोच कर रहा है इनवॉइस डिस्काउंटिंग, नहीं, इन एम्प्लियो नहीं काम करता उनके साथ में। बिकॉज उनको इनके पास इनफ डेटा ही नहीं है चेक करने के लिए कि क्या हिस्ट्री है उनकी या क्रेडिट परफॉर्मेंस है, राइट। सो 2 years हिस्ट्री ऑफ द बायर एंड सप्लायर consistently working together is very important for them. In this 2 years, they analyze the GST reports. They analyze that they tallied with the bank statements. How this works? If they are raising an invoice one day, one of the GSTR portal, they have given their buyer a tenure of 90-day credit cycle. But they see that their bank statement in the past 2 years consistently, the repayment is coming after a delay of 5 to 10 days. आता है पैसा बट डिले आता है 5-10 दिन। सो उनको पता है कि एम्प्लियो को कि इसके साथ मुझे 90 दिन की जगह 100 या 110 दिन पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, 10-20 दिन बफर रखना पड़ेगा। बट ये 2 साल की जो हिस्ट्री है ना, वो एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंटली वो करते हैं। फिर द ओनली फोकस ऑन स्टेबल इंडस्ट्रीज लाइक कंज्यूमर गुड्स, रिन्यूएबल्स, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, एंड अनदर क्राइटेरिया सप्लायर इज हैव टू बी अ प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड फॉर द लास्ट 3 years। प्रॉफिटेबल होना चाहिए तो ही वो काम करते हैं। दे मस्ट बी प्रॉफिटेबल एट EBITDA लेवल फॉर द पास्ट 3 years। And then after the bank statements, financial statements, they have to be audited for at least 3 years. They must be legally compliant. They must not have any major dispute in any court of law. They also analyze their OD and CC limits. Banks होता है ना कि suppliers को ये बैंक्स लेंड कर देते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि उन्होंने अगर कभी सप्लायर पैसा लिया है तो कितने टाइम पे चुकाया है, नहीं चुकाया है, सारी चीजें देखी जाती है। सो दे आर ओनली वर्किंग विद सप्लायर एंड कमिंग टू देम, दे विल नॉट वर्क विद देम। बिकॉज उसमें है ही नहीं ना, अगर बैंक्स का इतना स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है जो फॉलो करते हैं, इसलिए ये भी वही फॉलो कर रहे हैं। So they are only working with suppliers who have already maximized their OTC limits. If these conditions are not met, they do not proceed to the second step. Second step बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लियो के लिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है फिजिकल वेरिफिकेशन। एम्प्लियो की एक टीम है जो बायर सेलर के ऑफिस जाएंगी ऑन ग्राउंड। उनकी 25 लोगों की टीम है जो ऑन ग्राउंड ये सारा कुछ चेक करेंगे, सप्लायर के ऑफिस विजिट करेंगे, उनके रिलेशनशिप कैसे मेंटेन हो रहे हैं बायर के साथ वो चेक करते हैं। सेलर कंपनी के फाउंडर के साथ मिलते हैं, दे विल विजिट देयर फैक्ट्रीज और ऑफिसेज, दे अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट, दे अंडरस्टैंड हाउ दे ऑपरेट, एंड दे अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई दैट द बिजनेस इज जेन्यून एंड स्टेबल। Because some things you would only understand in person, not on paper. So the second step, physical verification, that is the most important step for Amplio. Now, once they feel that the company is good, the founder, the people behind the company are ethical, then deal terms are finalized. So they provide them a sanction limit. At any point of time, they will finance up to, let's say, X crore, let's say 10 or 5 crores. A sanction limit is provided to the suppliers. An agreement is signed, and against the sanction limit, which they have provided, they collect a personal guarantee.
from the seller's company's founders. This can be in form of tangible or intangible asset. जो भी पर्सनल गारंटी वो ले रहे हैं सप्लायर से, वो ये टैंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स में हो सकती है ना। ये सेकंड स्टेप हो गया, डील टर्म फाइनलाइज्ड हो गए, डिस्काउंट अग्रीमेंट साइन हो गया। अब आता है फाइनल स्टेप जहां पे है आरबीआई मैंडेट और 90 डे लोन सीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सो जो भी एनबीएफसी है, एम्प्लियो की गंगा बेस्ड वाटर प्राइवेट लिमिटेड, वो जब भी डिस्काउंट करेगी सप्लायर के इनवॉइस, तो उनको वो लोन जो है अपने बुक्स में रखना पड़ता है 90 डेज के लिए। आरबीआई की गाइडलाइंस हैं सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स, वो ये कहती है कि ये लोन बुक्स परफॉर्म करनी चाहिए। एम्प्लियो सीधा लोन ये नहीं दे सकता आज और इमिडिएटली उसको डाउनसेल नहीं कर सकता। मतलब आज उन्होंने लोन दिया सप्लायर को और कल उन्होंने इन्वेस्टर्स ढूंढ के पैसा ले आए उसके अगेंस्ट, नहीं कर सकते वो। उनके बुक्स पे वो 90 डेज रहना ही चाहिए, ये सीजनिंग पीरियड है। अगर उसमें अप एंड डाउन हुआ तो वो वर्क नहीं होता, वो वर्क नहीं करते, वो ड्रॉप द आइडिया बेसिकली। सो दैट्स द ड्यू डिलिजेंस स्टेप प्रोसेस दैट दे फॉलो। And taking to account this process, they, well, Amplio have a track record of 5,000 plus crores in repayment, and they have never defaulted till now. So no supplier that they have ever dealt with has ever gone through a default. They have a track record of 100% on-time repayments to investors. Now there are some of the suppliers whom and buyers they work with, like Amazon, Flipkart, Hindustan Petroleum, the Tata Group, as I mentioned, Reliance Industries, Adani Group, Bank of India, SDFC Bank, Bank of Baroda, all multiple blue chip companies, all AAA rated buyers. So now let's talk about the risk. Now, the only particular risk attached to the product of invoice discounting in Amplio, it's so they're not taking the investors' money and putting it into equity markets or particular debt products. The business is basically giving out loans. So the only particular risk attached to the product is a risk of default. What if on a day of maturity the buyer does not pay the amount? होता है ना कि buyer पैसा नहीं दे रहा आज, नहीं है उसके पास पैसा। दिस इज द प्राइमरी रिस्क इन इनवॉइस डिस्काउंटिंग। सो इसको फॉलो करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए, टू मिटिगेट दिस रिस्क, दे हैव टाइड अप विद यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस। तो यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस और उनके साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में एंटर हुए हैं वो। तो जब भी मतलब उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ये कहती है कि टेकिंग इनटू द क्लियर गाइडलाइंस व्हेन ऑनबोर्डिंग सप्लायर्स, जो भी ऑल ड्यू डिलिजेंस होगा, जो भी हमने बात करी अभी प्रीवियसली स्लाइड पे, ये सारा यूनिवर्सल सॉम्पो ने सेट किया है। और टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दीज स्टेप्स आर फॉलोड बाय एम्प्लियो। Whenever a supplier is raising an invoice, they collect a confirmation from the buyer in the form of a GRN or a SRN. Taking into account, they are doing all these steps. So they will, Universal Sompo will protect them against any buyer defaults or delays. So which is the only particular risk attached to invoice discounting. So you can see the loan is converted into through a SPV into a PTC, which is trusted managed by a trustee. Trustee is governed by SEBI. The product, the PTC, is governed by RBI, by NBFC, and plus the product is insured. The risk is insured by Universal Sompo General Insurance. So there are multiple layers of security for this product. So now, as I said, Universal Sompo, protects Amplio against any buyer defaults or delays, which is the only particular risk. As I said, they protect Amplio against any buyer default or delays up to 5 crore per invoice. If you see, Amplio has a record that when they are lending to any supplier, they raise an invoice of they can supply only up to 1 crore rupees. सो बिकॉज लाइक लेट्स से 1 करोड़ का लोन है, 1 करोड़ का इनवॉइस है, उसमें सिर्फ 80% ही वो इनवॉइस वैल्यू उसको लोन देते हैं, 80 लाख ही। मेच्योर उनको 5 करोड़ का पर इनवॉइस यूनिवर्सल सॉम्पो बैक कर रहा है, वो दे रहे हैं सिर्फ 80 लाख रुपए लोन में। तो वो बहुत लिमिट के नीचे चल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है इसके रिगार्डिंग। नाउ ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी, द बायर पेज इनटू देयर एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट इज क्रिएटेड। जो भी उसका पूरा 1 करोड़ रुपीज है, बायर उस एस्क्रो अकाउंट में देगा। 20 लाख का बफर है एम्प्लियो के पास में सिचुएशन में। तो जो भी ये 20 लाख है वो इंटरेस्ट उसमें चार्ज करते हैं जो भी टेन्योर के लिए होगा, और जो सरप्लस अमाउंट है वो पास बैक हो जाता है सप्लायर को। नाउ द इंश्योरेंस कंपनी इज इंश्योरिंग एम्प्लियो फॉर द अमाउंट दैट द बायर इज गोइंग टू पे देम बैक, that is 5 crore up to per invoice. Now they have been in this business. Amplio has been in this for the last 5 years. They have done over 5,000 crores in repayments. They have discounted over 120 plus companies' invoices.
Till today, no company has raised an invoice of worth of 2 crore rupees. The highest individual invoice value till date they have received is 2 crore. Now, companies do transaction of 20 crore, 30 crore, but they don't raise a single invoice of 20, 30 crores. Invoices are usually split across, right? So this is how they are able to tell that their personal plus principal and interest of the investors is fully backed by insurance 100%. So this was all about invoice discounting. Now I'll pause over here. Let's see if any questions are there. I'll take on the questions. So if I'll just check for the chat box. Okay, so one of the attendee has asked, the invoice could be rejected because the vendor did not perform. How is this addressed? Since the vendors are smaller than the corporate anchors. So in this case, as I said, the due diligence is the must. It's a main important process which Amplio follows in this case. They do not work with small vendors or small buyers or suppliers. It has to be a company which is doing 500 crore turnover company. As you must have seen in my slide, all the major names of India are mentioned over there. So they work only with the bigger names, not with the smaller names. So that is the main thing. Now, the invoice which can be rejected, you are saying. So in this case, what happens is that they do not work only. Amplio does not work with the there could be a dispute in this case. So this is one thing. Now, okay, Mr. Sekhar has, when bank provides working capital loan, why again supplier look for discounting through this method? Yes, it's true. Bank provides working capital loan. It's understandable, but the what we say, the seller, they require loan for, obviously they require, they take loan against the invoices. Working capital loan can be provided by banks only against, there is no security in it. In invoice discounting there is security, and yes, they know, the supplier also knows that they will get the money back, they need the money right now. So that is the good option, and bill discounting has been there in the industry since a long time. Okay, Nitesh has asked, give an example with live calculation. So, like what you need for a live calculation. So it's a simple calculation. So let's say a 1 crore invoice is raised against for a loan by the supplier. In this case, Amplio will give only 80% of that loan. So it will be like 80% of 80 lakhs rupees. Correct. Now the invoice, they will be transferring it, as I said, to a PTC through a SPV, and then they will be dividing it to a for a 1 lakh rupees face value to the investors for the investment. Like this, it happens. If you want a finer calculation, my team will get connect with you in the next week, and then you can have a one-to-one word for the same. Okay, Ms. Dinesh has asked, you can payment can be delayed by 5 to 10 days. This will impact yield to a greater extent in 90 days product. So, Mr. Dinesh, this was an example given where, as I said, that they see a 2 year history of the buyer and the seller, what they have doing. Like, let's say, if the buyer is, अगर वहाँ पे buyer हर बार 90 days का बोल के 10 दिन लेट दे रहा है पेमेंट, एम्प्लियो को पता है कि पैसा आ रहा है कंटिन्यूसली 2 साल से, 3 साल से भी, कोई भी डिले नहीं, डिले मतलब 10 दिन का, 5 दिन का है, उससे ज्यादा नहीं होता, तो वो पहले ही उसको जब लोन आगे देगा, वो वहां पे 90 डेज की जगह 100 दिन या 110 दिन, 10 दिन की जगह 20 दिन एक्स्ट्रा लेके चलेगा। उसी हिसाब से वो पीटीसी जनरेट करेंगे और उस हिसाब से इनवॉइस डिस्काउंटिंग का प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो उस हिसाब से सारी चीजें, वो सारी चीजें ट्रैक रिकॉर्ड देख के उसके बाद ही वो कवर करते हैं। Okay, what would be the return through this method and tax implementation on gains? So returns would be 11 to 12% for invoice discounting per annum. In this case, investors, there's a downsell model also in this. My team will, yes, we can take it offline also, but general that the general returns are 11 to 12% per annum. Now the duration, the tenure is 30 days, 60 days, 90 days, or 120 days also. In different terms, the investor has the option to choose what term he needed in this case. So you can inform the client accordingly. Now the returns would be same 11 to 12% accordingly, and you can downsell it also. As I said, let's say let's compare it with a debt mutual fund. Let's say if you're a if you're MFD, you're providing your customer a liquid fund or a low duration fund or any debt fund where the returns are basically 6 to 7% IRR. This product you can keep it for 10% also.
you can keep it for 11% also. So it works like that. So this is the return. Now tax implication, there is no TDS deducted from the Amplio side on the returns, returns given to the investor at the time of liquidity. Tax implication is as per the tax slab, the marginal tax slab of the customer. So I believe all the questions have been answered in the chat box. If you have any questions, you can again ask, or I can move on to the next product, which is insurance buyout. How to invest, Mr. Shekhar has asked. Okay, so Mr. Shekhar, if you are a existing IFANOW user, our team will connect with you. Even if you are not, then my business development team will connect with you in the next week, probably. So you can, they will help you out regarding all the processes. Okay, Mr. Sriraj has asked LTCG above 2 years is 12.5%. So yes, so if any investor keeps the PTC, then the LTCG comes into place. If they are not, if they are investing only for 30 days, 60 days, 90 days, or 120 days, as I said, the marginal tax type will be applicable. But yes, as it's a debt product, if they are keeping it for a 2 years product for the whole PTC tenure, then the LTCG rate, which is 12.5%, that is applicable to them. So, Mr. Atlas, you have asked that it's not right to compare it with FD. So, I'm not comparing with FD. I'm comparing all these products because see, FD or let's say a debt mutual fund, they are a traditional fixed income product. Now, there are two things into this. There are two things into this because see, FD, if you say when I talk about not particularly about FD, let's say I talk about the whole fixed income category where we have been into FDs or bonds or general NCDs or let's say debt mutual fund. So those products are like they are they lag behind because why today in today's market why because inflation, second tax bracket, so all those things. So if you compare FD with invoice discounting or any other new age product of this thing, what we said, fixed income category, there are many products like that. So yes, direct comparing with FD isn't right. I agree with you. But yes, FD also has risk because let's say I'm talking about a bank FD. So let's say you are investing in a bank FD as an investor or as an advisor. You have made your investor invest. It's a HNI client. Let's believe that now, FDs has a rule of DICGD that only up to a limit of 5 crore can be, this thing given back if the bank defaults. We have seen major government banks defaulting in this case. So it is not the case. Even AAA rated bonds default. So we have seen this. ILFS and many, many other debt mutual funds also have been defaulted. I'll not speak about the company, the AMC name, but it was a top 10 company. It was under a top 10 company, the AMC, for which the debt mutual funds defaulted. So there are many multiple factors into this. So I believe I've answered all the questions for this. Now I'll move on to the next product because we have again limited time and we have much more to cover. Okay, so Mr. Sekhar has asked the last question for what happens if Amplio defaults. So that's what Amplio cannot default in this case because Amplio is only routing the money in this case. All the investments are backed by all the invoices are backed by the insurance company, which I said is Universal Sompo Private General Insurance, who is handling all these things. So there is no case of default right now till now. And yes, as IFA now, we have curated only because the invoice discounting is been done through there are many manufacturers out there who are doing invoice discounting. Why we are doing with Amplio? There's a reason for it because one of our co-founder, Mr. Sonesh, he himself is a practicing RIA. He knows what investment, what type of risk is there with the manufacturers, what type of manufacturers are there in the market. So all these things have been taken care of, and then only the curated product basket or the curated what we say manufacturers have been taken care of in this growth plus section. Okay, now I'll move on to the next part of my webinar.
I'll just share the screen once again. Okay, so now the next product is insurance buyout. Now, what is insurance buyout? What is insurance policy buyout? Anyone has heard? I think yes. So insurance policy buyout is a secured short-term investment opportunity where investors acquire assigned ULIP policies at a discount, earning 11 to 12.5% XI through debt fund growth and with low risk and tax efficient maturity benefits. सो इंश्योरेंस पॉलिसी बायआउट में क्या होता है ना, अब समझिए कि एक कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मेरी पॉलिसी है यूलिप पॉलिसी। मैंने 2 साल पैसा भरा, 2 साल उसके प्रीमियम भर दिए, तीसरे साल मेरे पास पैसा नहीं है भरने के लिए, क्या होगा? लैप्स हो जाएगी पॉलिसी। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन, मतलब ऑप्शन मेरे पास एक्चुअली एक ही है कि मैं उसे सरेंडर कर दूं। बट अगेन यूलिप पॉलिसी है, 5 साल का लॉक इन है, कैसे मैं सरेंडर करूंगा उसे? पैसा मुझे सरेंडर वैल्यू मिलेगा, बट 5 साल जब मेरा खत्म होगा टेन्योर, व्हेन माय 5 years टेन्योर विल बी ओवर फॉर द यूलिप लॉक इन, देन ओनली आई विल बी एबल टू टेक माय सरेंडर वैल्यू। सो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आती है यूलिप पॉलिसीज में, जो डिफॉल्ट करती हैं या जिनको जो पैसा भर नहीं पाते कस्टमर्स, पॉलिसी होल्डर, वहां पे इंश्योरेंस पॉलिसी बायआउट करके टर्म है, इंश्योरेंस रीअसाइनमेंट जिसे कहते हैं, वहां पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह इसे बना दिया गया है, एक सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जहां पे जो इन्वेस्टर है उन्हें 11 से 12.5% तक का एक्सआईआर मिलता है। लो रिस्क, टैक्स एफिशिएंट मेच्योरिटी बेनिफिट्स, कैसे हम आगे देखते हैं। ना, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इन प्री ओन्ड पॉलिसीज? मिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन इंडिया सरेंडर लैप्स द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग इट टेन्योर। इंडिया में काफी हाई है रेट कि लोग अपना पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं या लैप्स कर देते हैं। इसका रीजन भी ये है, उन्हें जरूरत ही नहीं होती उस पॉलिसी की। काफी बार उन्होंने 2-3 पॉलिसी ले ली होती है किसी के बोलने से, एक के बदले दो, दो के बदले तीन। इस वजह से उन्हें लगता है कि एक बार पैसा या दूसरी बार पैसा भरने के बाद उन्हें लगता है कि ये पॉलिसी मुझे बंद कर देनी चाहिए, तो इसलिए लैप्स हो जाती है पॉलिसी। अब इंश्योरेंस कंपनीज दे डू नॉट वांट द पॉलिसी टू बी लैप्स्ड, बिकॉज उनका तो नुकसान है इस केस में, पैसा अगर आगे आएगा नहीं तो। ठीक है, और जो भी इंडिविजुअल इन पॉलिसीज में इन्वेस्ट करता है, जहां पे ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर को सरेंडर चाहिए पैसा अपने लैप्स पॉलिसी का, वहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्री ओन्ड पॉलिसीज आता है। इस पूरे ट्रांजेक्शन को रीअसाइनमेंट कहते हैं, जहां पे पॉलिसी का जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाती है जो इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैं पॉलिसी होल्डर था, मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई, मेरी पॉलिसी रीअसाइनमेंट में गई, जहां पे मुझे सरेंडर वैल्यू जो मुझे अभी चाहिए थी वो डिस्काउंटेड में मुझे मिली है सामने इन्वेस्टर से, और वहां पे मैं अभी मोनेटाइज कर सकता हूँ उस पैसे को। ठीक है, इसको सिंपल वे में वापस से मैं समझाता हूँ जिन्होंने नहीं सुना अगर। मैं एक पॉलिसी होल्डर हूँ, मेरी इंश्योरेंस एक पॉलिसी है यूलिप की, मैंने 2 साल पैसे भरे, तीसरे साल मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने लैप्स करा दी पॉलिसी। लैप्स पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिलती है, बट क्योंकि ये यूलिप है, 5 साल का लॉक इन था मेरी पॉलिसी को, मैं पैसा अभी नहीं ले सकता। मैं क्या करूंगा पैसे के लिए? एक रीअसाइनमेंट प्रोसेस है, जिसमें मैं पॉलिसी अपनी किसी और को ओनरशिप उसकी दे दूंगा। वो मुझे डिस्काउंट में एक सरेंडर वैल्यू देगा, ताकि मेरे को पैसा जो 2 साल बाद या 3 साल बाद मेरे यूलिप पॉलिसी का जो मेरा लॉक इन है वो खत्म होने के बाद मिल रहा था, वो अभी मिल गया। अब क्योंकि जो लैप्स पॉलिसी है, उनको इंश्योरेंस कंपनी डिसकंटिन्यूअस फंड में डाल देती है। डिसकंटिन्यूअस फंड्स बेसिकली 3 से 4% आईआरआर देता है। अब जैसे ही रीअसाइनमेंट हो जाता है, उसके बाद में जो जो 3 से 4 जो उसको यूलिट डेट फंड में ट्रांसफर कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। when it is transferred to a unit debt fund, at that time they generally earn 6 to 7% IRR. Now how 11 to 12% IRR the investor in getting? इन्वेस्टर को कैसे 11 से 12% आईआरआर मिल रहा है? क्योंकि डिस्काउंटेड सरेंडर वैल्यू उसने दी थी, इन्वेस्टर ने डिस्काउंटेड सरेंडर वैल्यू दी है। तो जो सरेंडर वैल्यू कस्टमर को अभी मिल रही थी उससे कम में इन्वेस्टर ने खरीदा है उससे, इसलिए जो एक्सआईआर कैलकुलेट होगा वो 11 से 12% होता है। ना, वाई पॉलिसी होल्डर्स असाइन लैब्स यूलिप पॉलिसी? आप कहेंगे कि यूलिप पॉलिसी क्यों असाइन कर रहे हैं करके।
So ULIP policy have a mandatory lock-in period of 5 years, as I said. Now, in case of surrender within the lock-in, the surrender value cannot be paid before the end of the lock-in period. जो भी surrender value का जो surrender का lock-in period है उसके पहले वो नहीं कर सकते. Now, the policy holder has to reverse all tax benefit previously availed. Any gain on surrender also becomes taxable. तो ये भी है कि अगर वो सरेंडर उसको कर देगा अगर डायरेक्टली कंपनी को, तो उस केस में उसके टैक्स बेनिफिट जो भी है वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं. नॉट ओनली डज द पॉलिसी होल्डर लूजेस लाइफ कवर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. आज अगर मैंने पॉलिसी सरेंडर कर दी, चलिए ठीक है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी का मेरा जो 5 साल का लॉक इन है वो मैं रुक गया और तब मैंने पॉलिसी को सरेंडर किया. मेरा लाइफ कवर तो वैसे ही चले गया है मेरे पास कोई जरिया भी नहीं है लॉक इन के अंदर उसको इनकैश करने का या मोनेटाइज करने का. तो मैं कैसे करूंगा? So on discontinuance of ULIP policies, the entire fund value must be switched to a discontinuation fund, which can only invest in government securities. यूलिप पॉलिसी का जैसे ही डिसकंटिन्यूस होता है, मैंने जैसे कहा, तो जो एंटायर फंड वैल्यू होती है वो एक डिसकंटिन्यूस फंड में डालनी पड़ती है उन्हें, जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ, insurance reassignment or insurance buyout provides an exit option to policyholders during the lock-in period. So immediate payment of a calculated surrender value as well as continued life cover. अब इसमें अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा. यस, थैंक यू. सो हाँ, इसमें ये होता है कि इंश्योरेंस रीअसाइनमेंट जो है एक एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है पॉलिसी होल्डर को लॉक इन पीरियड के दौरान. इमीडिएट पेमेंट एक हो रहा है उनको कैलकुलेट सरेंडर वैल्यू डिस्काउंटेड, मैंने जैसे कहा. प्लस रीअसाइनमेंट जब होता है, ओरिजिनल जो पॉलिसी होल्डर है उसका लाइफ कवर चालू रहता है, कंटिन्यूड हो जाता है. कैसे वर्क करता है मैं आपको आगे बताऊंगा. So these are the salient features of this product: risk, return, and tenure. What we speak about basically. So first is liquidity risk and interest rate risk. रिस्क में बेसिकली दो ही चीज है, लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि ये 2 से 4 साल तक का प्रोडक्ट है इंश्योरेंस बाय आउट, तो इसमें एक लिक्विडिटी रिस्क है, कस्टमर तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते. इंटरेस्ट रेट रिस्क है इसमें, अगर बाई चांस कोई इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुआ उसका रिस्क है. तो उसमें क्योंकि ऑब्वियसली जो यूलिट डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी ने, इस लैब्स पॉलिसी को जो रिवाइव किया उसके बाद भी यूलिप डेट फंड में रहता है ये पैसा, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क उसमें रहता है. इट्स नॉट मेजर बट यस इट इज देयर. नाउ रिटर्न दिस बेसिकली 9 to 12% और 12.5% भी है. टैक्स एफिशिएंट है. वाई? यूलिप हैज concept of 2.5 lakh rupees प्रीमियम. जो बेस प्रीमियम है इट हैज टू बी 2.5 लाख पर पैन कार्ड पर ईयर. अगर 2.5 लाख का लिमिट क्रॉस होता है प्रीमियम का, देन इन दैट केस वो टैक्सेबल हो जाता है और उस पर एलटीसीजे लगता है 12.5%. तो सपोज कीजिए कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, सपोज कीजिए मैं एक जनरल इंसान हूँ जो जिसकी एक यूलिप पॉलिसी चल रही है ऑलरेडी इंश्योरेंस की, जिसका 60,000 रुपये में प्रीमियम भर रहा हूँ साल का. अब आप मेरे एडवाइजर हैं, आपने मुझे कहा कि इंश्योरेंस बाय आउट करके एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे यूलिप लैब्स पॉलिसीज आपको लेने मिलेंगी डिस्काउंटेड सरेंडर वैल्यू में, जहाँ पे आपका आईआरआर 11 से 12% बन जाएगा. मैं कहूंगा ठीक है. अब मैं जो इंश्योरेंस रीअसाइनमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करूंगा, देखिए है तो वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ही मैं ले रहा हूँ, सिर्फ मुझे कवर नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस का, सिर्फ उसका एक जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो मुझे मिल रही है. अब उस जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका जो प्रीमियम है बेस प्रीमियम वो 2 लाख रुपए है. मेरा साल का 2.5 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाता है. अब मुझे टैक्स तो लगेगा, बट एज एन इन्वेस्टर ये मेरे ऊपर है जब मेरा सीए टैक्स फाइलिंग करेगा कौन से ब्रैकेट में मुझे करवाना है. मतलब कौन से प्रीमियम को मुझे टैक्स लगवाना है, 60,000 वाले को या 2 लाख वाले को, ये मेरे ऊपर है. तो इतना इन्वेस्टर्स को छूट मिलती है. दिस इज द टैक्सेशन रिलीफ विच द इन्वेस्टर गेट्स. इट इज अप टू देम that they want to get the tax, whether the premium of 60,000 or the 2 lakh rupees. It's up to their CA and their filings. Tenure is basically 2 to 4 years. 2 से 4 साल का प्रोडक्ट है. Now, how safe, viable and lucrative this product? जब मैं इसको अगर आप ग्राफ भी देखेंगे, प्री ओन्ड इंश्योरेंस है ये बेसिकली. तो इसकी बैकिंग जो है, जो पैसा मिलने वाला है कस्टमर को, वो एक इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है. इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती. दिस इज बीन देयर इन सिंस 20 years. असाइनमेंट ऑफ पॉलिसीज इज बीन डन बाय इंश्योरेंस कंपनीज फॉर मोर देन 20 years इन इंडिया. 20 साल से ये हो रहा है इंडिया में ऑलरेडी. असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी इज अ लेजिटिमेट प्रोसेस अलाउड एज पर इंश्योरेंस एक्ट.
Now IRDAI ensures all insurance companies comply to capital adequacy norms, hence risk is negligible. IRDAI ये ध्यान रखता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स फॉलो करे, इसलिए रिस्क एकदम नेग्लिजिबल है. और इन्वेस्टमेंट इन प्री ओन्ड पॉलिसीज इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट एन एसेट क्लास विच इज टैक्स फ्री. तो टैक्स फ्री क्यों? जैसे मैंने कहा, अप टू अ लिमिट. सो अप टू अ लिमिट इट इज टैक्स फ्री, अदरवाइज कैपिटल गेन लगेगा उस पर. Still, if you see, if you compare it with any other debt product, this will be our higher range only. So now it provides higher returns than FDs or other products, other debt products with same safety. Investment in pre-owned insurance policies will be a thriving asset class in 3 to 4 years time. Now insurance buyout का एक process जो है, मैं फिर से repeat कर देता हूँ. यूलिप पॉलिसी सरेंडर होती है लॉक इन में. यूलिप का 5 साल का लॉक इन है. यूलिप हैव अ 5 year लॉक इन. इफ सरेंडर्ड विद लॉक इन, सरेंडर वैल्यू इज पेड आफ्टर लॉक इन. लॉक इन के अंदर अगर सरेंडर हुआ तो सरेंडर जो वैल्यू है इंश्योरेंस कंपनी लॉक इन के बाद पे करती है. गेन्स जो है वो टैक्सेबल हो जाते हैं और लाइफ कवर स्टॉप हो जाता है पॉलिसी होल्डर के लिए. रीअसाइनमेंट ऑफर्स एन एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग लॉक इन. इमीडिएट सरेंडर वैल्यू प्लस कंटिन्यूड लाइफ कवर. रीअसाइनमेंट का प्रोसेस ये है. इन्वेस्टर्स बाय इंडिविजुअल पॉलिसीज इन अ प्रोसेस ऑफ रीअसाइनमेंट. Policies are acquired at a discounted surrender value, generating an IRR of 11 to 12% for investors. एक डिस्काउंटेड सरेंडर वैल्यू में पॉलिसीज अक्वायर की जाती हैं, जहां पे 11 से 12% का आईआरआर जनरेट होता है. इन्वेस्टर्स फंड्स आर फुली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ अंडरलाइंग पोर्टफोलियो ऑफ जीसेक एंड लिक्विड फंड्स. क्योंकि डेट यूलिप डेट पॉलिसी है, तो इसमें जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो होता है वो जीसेक और लिक्विड फंड्स का है, और वहां पे ये डेट फंड में रहती है इंश्योरेंस कंपनी के. इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स एट द एंड ऑफ लॉक इन. फंड्स रिमेन इन 100% डेट फंड, जो 6 से 7% रिटर्न दे रहे हैं सालों से, पास्ट ईयर से. दे हैव गिवन 6 to 7 रिटर्न इन द पास्ट ईयर्स. सो दैट्स द रीजन दे आर 100% सिक्योर्ड. एट द एंड ऑफ द लॉक इन द पॉलिसी इज लिक्विडेटेड. पॉलिसी लिक्विडेट की जाती है और फंड वैल्यू पे करी जाती है इन्वेस्टर को. लाइफ इंश्योर्ड जो है, जो पॉलिसी होल्डर था, उसको मॉनेटरी बेनिफिट रिटेन, पार्शियल लाइफ कवर पोस्ट असाइनमेंट हो जाता है. अगर उसकी डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की ओरिजिनल, तो जो नॉमिनी है उनको सम अश्योर्ड माइनस द इन्वेस्टर रिटर्न मिल जाता है. सपोज कीजिए कि अगर, जैसे मैंने कहा कि मेरी पॉलिसी है, मैं नहीं भर पाया, मैंने रीअसाइनमेंट के थ्रू किसी और को दे दी, इन्वेस्टर को. एब्सोल्यूट असाइनमेंट हो गया मेरा, उसमें से सारे राइट्स चले गए, सिर्फ लाइफ कवर मेरा चलेगा जब तक वो पॉलिसी कंटिन्यू करेगा इन्वेस्टर. नाउ इसमें क्या है ना, लिक्विडेशन डेट हम बोलते हैं. तो लिक्विडेशन डेट वो डेट है जब लॉक इन खत्म होने वाला है. मेच्योरिटी डेट वो नहीं होती. मेच्योरिटी डेट पॉलिसी के आगे हो सकती है, क्योंकि यूली पॉलिसी 10 साल 15 साल की भी हो सकती है. लेकिन जो उसका लॉक इन डेट है फ्री, उस दिन को लिक्विडेशन डेट माना जाता है. अजम्पशन ये है कि लिक्विडेशन डेट पे इन्वेस्टर पैसा निकाल ही लेगा, लिक्विडेट कर ही लेगा, क्योंकि उसको आईआरआर जो 11 से 12% कैलकुलेट करके बताया गया है वो उसी टाइम के लिए है. अगर वो आगे रखता है तो ऑब्वियसली वो आईआरआर गिरता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूलिट डेट फंड में है, जहां पे 6 से 7% रिटर्न ही बन रहे हैं. अगर इस केस में इन लॉक इन खत्म होने के बीच में, या फिर जो ये लिक्विडेशन डेट से पहले अगर मुझे कुछ हो जाता है एज अ ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर, क्योंकि मेरा लाइफ कवर चालू था, तो मेरा जो नॉमिनी रहेगा इस पॉलिसी में, उसको सम अश्योर्ड मिलेगा. सम अश्योर्ड पूरा नहीं मिलेगा. सम अश्योर्ड में से जो इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न जाने वाला है, उतना कट के सम अश्योर्ड मिल जाएगा मेरे नॉमिनी को. सम अश्योर्ड जनरली प्रीमियम का 10 times होता है, 10x होता है. नाउ द टैक्स एप्लीकेबिलिटी. टैक्सेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल यूलिप पॉलिसीज. तो यूलिप पॉलिसीज जो है, एज अ दे आर डिफाइंड एज कैपिटल एसेट्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी इज रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन अंडर 10 of 10D ऑफ द एक्ट. और अगर जहाँ पे एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो वहां पे LTCG लगेगा और 12.5% दे आर टैक्सेबल. Regulatory framework is very simple. Insurance reassignment or insurance assignment is governed by Section 30 of the Insurance Act. So there is absolute transparent assignment rules. It's an absolute assignment. It is irrevocable. वापस नहीं हो सकता. और जो इन्वेस्टर के राइट्स हैं वो मेच्योरिटी तक पूरे सिक्योर्ड रहते हैं. इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरर जो है, वो वैलिडेट करता है. दे वैलिडेट द एलिजिबिलिटी एंड इंश्योर्स पॉलिसी इज कंप्लायंट बिफोर असाइनमेंट. हर पॉलिसी जो चल रही है, ये लैप्स हो गई है, उसको जरूरी नहीं है कि असाइनमेंट हो. कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है कि जो ये पॉलिसी होल्डर है ओरिजिनल, उसको कुछ जल्दी होगा तो नहीं. वो भी सारी चीजें देखी जाती है. सो दे इंश्योर, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड, एंड देन इट इज डन. इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बहुत सिंपल है.
यूलिप पॉलिसी जो प्री स्क्रीन्ड है उसकी एक लिस्ट आती है हमें फैसिलिटेटर से, जो फैसिलिटेटर से हमें लिस्ट आती है, हम आगे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को या वेल्थ मैनेजर्स या आईएफएस को शायद शेयर करते हैं इन्वेंट्री। जैसे इन्वेस्टर उसे चूज करेगा, इन्वेस्टर चूजेस अ पॉलिसी बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड आईआरआर एंड लॉक इन पीरियड। Relevant documentation initiated for sign off by assigner, which is the policy holder, and the assignee, which is the investor. साइन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट हो जाते हैं अप्रूवल के लिए। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेसेस द केस एंड गिव्स अप्रूवल, वो सारा चीज चेक करके एसेस करके और अप्रूवल दे देती है। उसके बाद इन्वेस्टर इज रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट। व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय द इन्वेस्टर टू द फैसिलिटेटर, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा जो प्रीमियम रिवाइव करने के लिए पॉलिसी लगेगा वो आगे दिया जाता है, प्लस पॉलिसी होल्डर जो ओरिजिनल था उसको जो डिस्काउंटेड सरेंडर वैल्यू बोली गई थी वो दी जाती है। इसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी इंडोर्समेंट लेटर इशू कर देती है इन्वेस्टर के नाम पे। इन्वेस्टर ओरिजिनल इन्वेस्टर जो है पॉलिसी ओनर बन जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल में जाके लॉगिन वगैरह देख करके अपने क्रेडेंशियल से चेक भी कर सकते हैं कि पॉलिसी उनके नाम पे है, सारी डिटेल्स वगैरह। कैसे वर्क करता है ये एक एग्जांपल हमने रखा है इसमें। तो सपोज कीजिए कि वन टाइम इसमें है यूलिप पॉलिसीज है, ओरिजिनल पॉलिसी 5 पे 10 years है, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। प्रीमियम पेड बाय पॉलिसी होल्डर 1,20,000, फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years फंड 1,10,000। इन्वेस्टर ने, जो इन्वेस्टर आ रहा है रीअसाइनमेंट के थ्रू, उसने डिस्काउंटेड सरेंडर वैल्यू 68,910 भरी, और प्लस एक प्रीमियम जो 60,000 का था पॉलिसी रिवाइव करने के लिए वो भरा। टोटल उसने भरा 1,28,000। जब आफ्टर 3 years उसे मिलेगा 1,85,000 अप्रोक्सीमेटली, 5 साल के लॉक इन जब खत्म होगा यूलिप का, और आरओआई उसका 12% के आसपास बनेगा। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। These are the sample policies which we share daily basis to our advisors. इन्वेस्टमेंट डेट उसमें होती है, लिक्विडेशन डेट होती है। नाउ लिक्विडेशन डेट इज द डेट ऑफ द लॉक इन फ्री डेट ऑफ दैट यूलिप, और आईआरआर मेंशन होता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेंशन होता है। सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आईआरआर, लिक्विडेशन डेट, इन्वेस्टमेंट डेट, इवन द बेस प्रीमियम इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस एक्सेल शेयर्ड बाय आवर टीम टू द एडवाइजर्स, क्योंकि कस्टमर्स को पता रहे कि टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से क्या इसमें रहेगा, पॉसिबल चीजें। दिस इज द एस्टिमेटेड मार्केट साइज ऑफ इंश्योरेंस लैब्स बुक। ये जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से बढ़ेगा ही, लैब्स बुक क्रॉस करेगी 4.5 लाख करोड़ को एक टाइम पे। और ये क्या है ना, इसमें असाइनमेंट जो है दैट विल क्योर ऑलमोस्ट 12 to 15% ऑफ द लैब्स बुक। सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी created by the facilitator into this, and this is a very fast selling product into the fixed income category. सो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आप पूछ सकते हैं। आई बिलीव देयर आर सम क्वेश्चंस इन देयर। Okay, Mr. Dinesh has asked that it means the yield is indicative and not fixed. No, it is fixed only. So because the IRR which is mentioned, जो IRR mention कर रही है insurance company, sorry, the facilitator, that is fixed only because they have done a back calculation at their back end to get into a XIR. So let's say क्या होता है ना, हर पॉलिसी को वो नहीं देते। हर पॉलिसी जहां पे पॉसिबल है, उन्हें पता है कि इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, 11%, 12%, 10%, उनकी जो रेंज है 9 to 12% के बीच में, उसी प्रोडक्ट को वो आगे लेके आते हैं, उसी लैब्स पॉलिसी को वो आगे रीअसाइनमेंट के लिए लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर भी, जो पॉलिसी होल्डर है सॉरी, वो भी मान जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस के लिए, उससे बात हो जाएगी डिस्काउंटेड प्राइस के लिए, प्लस इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं देगी, अप्रूवल हो जाएगा। तो यील्ड जो है इंडिकेटिव नहीं है, फिक्स ही है वो। Are you taking equity based ULIP or fixed return policies also? So see what happens, जो भी lapse policy होती है, whatever policies are lapsed, they go into the discontinuation fund of the insurance company. Discontinuation fund जो है वो 3 से 4% IRR देता है, they generally give 3 to 4% IRR. When the lapse policy is revived through insurance reassignment, it is moved to ULIP debt fund. Now ULIP debt fund invest basically in G-Secs and liquid fund that gives approximately 6 to 7% IRR in the past years. Now, how investor is getting 11 to 12% IRR? Because of the discounted surrender value which is given to the policy holder. Investor who is stepping in is not giving the full surrender value to the customer. He is to the policy holder. He is giving only the discounted value. Now, because of the discounted surrender value, as we saw in the example of one of my slide, they will be able to get a IRR of 11 to 12%.
Yes, now there's a twist to this. Let's say because of your question of equity based ULIP, let's say now I'm an investor. I took an insurance buyout policy. Now the insurance the policy is basically into a ULIP debt fund. My liquidation date is considered as the maturity. Sorry, not the maturity date. Let's say the lock-in free date. Once my liquidation date is there, it's up to me whether I want to liquidate or no. I will receive emails from the insurance company and the facilitator that my liquidity window is here. It's up to me whether I want to liquidate it or no. अगर मुझे लिक्विडेट नहीं करना है, मैं आगे इंश्योर, और मुझे लग रहा है एज एन इन्वेस्टर की मार्केट बहुत अच्छा जाएगा, लास्ट 2-3 साल से परफॉर्म नहीं किया मार्केट ने, मैं उसे इंश्योरेंस कंपनी को कह के यूलिट डेट फंड से यूलिट इक्विटी में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, ताकि मुझे और रिटर्न अच्छे मिले। 12%, 11% जो मुझे देखा गया था जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया था, उसकी जगह पे और पैसा मुझे और रिटर्न अच्छा मिल जाए। इक्विटी मार्केट 20% परफॉर्म करेगी, मुझे अच्छा आईआर मिल जाएगा। तो वो भी आप कर सकते हैं। Can I trade this bought back policy? You cannot trade this because once a reassignment is done, that is absolute. जो new owner है, the investor is the new owner basically, so that cannot be done in this case. The transaction is related to assigner to individual investor through intermediary. Yes, it is like that only. There's a facilitator in there in this whole process. So basically, the stakeholders are one, a policy holder, second, the insurance company, third, the facilitator, who is our whom through whom which we have tied up with. Fourth is the investor, who means जिसको आप लेके आओगे. Okay, so there are four stakeholders basically in this whole process. Don't Debt funds don't yield so much returns as promised. So, Mr. Mandeep, I've already answered to that question that how this is generating 11 to 12%, despite debt funds are into generate 6 to 7% because of the back calculation of the discounted surrender value. Also, how does the insurance company guarantee the XIR? So that's what Mr. Atlas, insurance company, does not guarantee because this lapse policy are moved to a ULIP debt fund. ULIP debt fund generally of every insurance company gives 6 to 7% XIR. That is there. So that is how this is calculated. If yield is so good, how insurance company benefit apart from getting premium? नितेश जी, एक्चुअली ये सवाल थोड़ा टीडियस है, बट ठीक है, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। सी इंश्योरेंस कंपनी, they do not benefit from the this thing investment. They benefit from the amount which is there. Now IRDAI also says that they do not want defaults to be happening, lapse policy nahi honi chahiye. They also incentivize these insurance companies to get the product going, to get the policies going. तो जो लैप्स रेशियो है वो कम हो, वो ज्यादा बढ़े नहीं, इसलिए आईआरडीआई भी इंश्योरेंस कंपनी को मैंडेट करता है कि वो पॉलिसीज को चलाते रहे। इंश्योरेंस कंपनी कैसे चलाएगा पॉलिसी? जब पॉलिसी में पैसा आता रहेगा या आएगा तो रिवाइव होगी पॉलिसी। सो दैट इज द वाई इंश्योरेंस रीअसाइनमेंट इज देयर, जहां पे इन्वेस्टर स्टेप इन करता है, एक जो डूबी हुई पॉलिसी है, लैप्स पॉलिसी है, उसको डिस्काउंटेड रेट में ले लेता है। प्लस उस जैसे मैंने सैंपल पॉलिसी में दिखाया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंटेन्स ऑफ थ्री थिंग्स बेसिकली, यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। वन, डिस्काउंटेड सरेंडर वैल्यू। सेकंड, फ्यूचर प्रीमियम अमाउंट जो भी लगेगा कंपनी को प्रीमियम ये रिवाइव करने के लिए पॉलिसी, 1 साल का, 2 साल का, एक साथ में सारा वो दे देगा इन्वेस्टर। थर्ड इज द अ स्मॉल फी विच इज गेटिंग चार्ज बेसिकली, जो फैसिलिटेटर लेता है इस चीज के लिए। तो ये चीज है। Is it individual policy or bouquet of policy or some kind of fund who is buying this policy like it happens outside India fund level? So there are multiple things into this. 90% of the policy which happens in reassignment are ULIP policy. Traditional ones are like 8 to 10% only. There's a bouquet of policies also. So yes, I missed one angle to this. Uh, इसमें reassignment happens through a PTC mode also, where there are like 20-25 policies in a PTC, single PTC, and the minimum investment of that PTC would be 50 lakh rupees. So generally, insurance policy buyout way in minimum investment start from 50 to 80,000 and can go up to accordingly as per the policy. But where we speak about a bouquet of policies, there I guess 20-25 policies would be there. It would be transferred to a PTC against managed by a trustee, and then it would be the minimum investment would be 50 lakh rupees. There the XIR is fixed 11%, so there is no changes in that. Okay, Mr. Sriraj has given one feedback. So as per your feedback, which is downselling,
That is there actually. So I guess you can speak with your RM because you have given the example of 12.3% being sold to customer at 11.5% difference of that is not the exact way how this works, but there is a separate way. I guess we can take this offline and you can speak with your RM. They will be, probably able to help you out with this. Now, assigner would be knowing the investor, the assignee. If so, what would the ratio? No, there is this does not happen itself. The assigner can be of Gurgaon, the assignee can be of Bangalore. They do not know each other because there's the middleman who is the facilitator. The facilitator is the main stakeholder who is taking all of the care of all these things. They are in touch with the assigner, they are in touch with the assignee, they are in touch with the insurance company, and they are in touch with you. So no, there is no risk of knowing the investor for the assigner. Okay, Mr. Dinesh has a question, but in guaranteed policy, the investment limit is 5 lakh rupees per annum. I do with them. So it's like as I said, major of the policies which come into insurance reassignment are ULIP policies because for normal traditional policies, there are multiple things which have to be keep in mind. ULIP policies are very simple in that case. So that's the reason, ULIP policies are much more done into this. Now, Mr. Mandip has asked, can we offer our policy for reassignment? So, no, this is not like what we say, where you can directly trade. But in this case, the data for the lapse policies come from the insurance company only directly to the facilitator. A normal person cannot approach them for the same. Mr. Sridhar asked, at the liquidation date, do policy paper need to be submitted or will the liquidation process be completely paperless and direct rate of liquidation amount in bank account? So in this case, what happens when the liquidation date approaches before 15 days, the facilitator and the insurance company emails to the investor for the liquidation. Once the investor gives the consent to them, in that case, then the liquidation is done. Without the consent of the investor, the liquidation cannot be done. It's an online process completely. There is no offline process included in this case. Mr. Atlas has mentioned, so the yield can vary by minus plus 1%. No, in that case, it cannot vary. It will not be like the facilitator has mentioned that the XIR, the customer is going to get 11%, but at the end he gets 10% or 12%. It does not happen like that because it is not into a, varying this thing risk only. It's a fixed, as I said. Is this lapse policies applicable for ULIP policies only? No, as I said, Mr. Shekhar, ULIP policies hold a 90% major chunk of the insurance reassignment because of their tenure cases. Now, for traditional policies, many of you will be having the question that why, in case of traditional policy, a policy holder will go for reassignment. He can take the surrender value directly from the insurance company because there is no lock-in. Yes, he can take that. But when he takes the insurance surrender value from the insurance company, his policy cover will not be renewed. His policy cover will not continue. Let's say I'm a customer, I'm a insurance policy holder, a normal policy holder, which is an endowment policy or a money back policy. I know that if I surrender today to the insurance company, I will not get the life cover. In that case, I have to go with reassignment because I don't have the money to pay for the policy. I don't want to take loan on my policy to pay my premium. Directly, I go with the reassignment process where someone else give me the surrender value, which I'll be getting. In that case, the IR will be less for the investor because there is no discounted surrender value. Okay, Mr. Sekhar, I've already answered that. That assignment applicable only for ULIP? No, it is applicable for all policies. Okay. Okay, Mr. Mandeep has asked, do we need to pay premium surrender? The investor has to pay surrender discounted value. So the calculation of the investment amount is including discounted surrender value, which will go to the policy holder, plus 1 year premium or maximum 2 year premium. It is based upon policy to policy, differentiated based upon policy to policy. So 1 year premium or 2 year premium, whatever premium is required to revive the policy as per the insurance company. So all those 1 or 2 year premium are taken directly along with that surrender value discounted by the from the investor.
Does every assignee know this existing method? I don't know which method you're speaking about, Mr. Sekhar. I believe for the reassignment process. So they are the investor basically. So as an IFA or as a wealth manager or as a distributor, you need to look about this as an investment opportunity for your customers into a fixed income category where they'll be getting approximately 10 to 11 or 10 to 12% XIR based upon the policy to policy. Are these policies available on IFANOW platform? So currently, we are dealing it offline, where you, let's say, if you are empanelment, if you are an existing IFANOW user and you are empanelment with Growth Plus, so you will be assigned a RM under Growth Plus. The RM, your RM will be, sending you the inventory daily basis. Now it's a very fast selling product, as I said. We have seen in the morning the facilitator has given us the inventory. In afternoon, all the policies are sold out. So it happens because it's a very fast selling product, as I said. So these are not currently available on IFNOW platform. It will be available in the coming months, but currently it's a offline process where your RM is a RM assisted journey. Your RM will help you out in this case. So is there any other questions? I believe you can ask in the chat box, or I'll be moving out to the next and the final product, which is real estate NCDs. Yes, Mrs. Mandeep. So that's what that you have a very good question. That what about declaration of good health? A customer has to submit before the revival or reassigning the lapse policy. Who will conduct the due diligence? So as I said, this is regulated through the Section 38 of the Insurance Act. The insurance company, without their approval, the assignment cannot be done. Post their approval, only the investor is asked for to pay the money to pay the investment amount. Prior to that, they do not have to pay the amount, any single amount also. Only they have to select the policy, and then the facilitator, on good terms, good faith of the distributor or the IFA, they directly speak with the insurance company and the assigner for all these things. Once the insurance company does the due diligence of the good health or of the, as of the original policy holder, after that only they approve the reassignment process. How many days it takes to complete the whole process? To Mr. Mandip, it takes about 7 to 10 days because there are lots of process in this. It completely depends on on how fast the original policy holder acts to this. They give their consent to this, on how fast the insurance company does the process. But we have seen it generally takes 7 to 10 days to complete the process. So I believe I have answered all the questions which are there in the chat box. Let's move on to the next product because we have a limited time period again. So I'll be again sharing my screen. Just allow me a moment. I hope my screen is visible. Yes. So the next product is real estate NCD. Now, when I speak about real estate NCD, when I speak about real estate NCD to any advisor or wealth manager, the first reaction I get is that this will default. And why is this first thought? क्यों है ये पहला थॉट? जब भी हम रियल एस्टेट एनसीडी या रियल एस्टेट की बात करते हैं, सबसे पहला रिएक्शन ये आता है कि ये डूब जाएगा. ये क्यों है पता है पहला थॉट? बिकॉज इट इज लिंक टू रियल एस्टेट. And we all know how developers across the country use gimmicks or tricks to default in the industry, because of which the industry has taken, and even today आज भी नेगेटिव कॉनोशन एक है इस इंडस्ट्री के अराउंड, बिकॉज डेवलपर ऐसा करते हैं. Now, when a problem is known, the investment product has to be made with a solution around it. जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है रियल एस्टेट में, तो अगर इसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना रहा है कोई भी मैन्युफैक्चर, तो ये सारे जो रिस्क है या जो भी इश्यूज हैं उसे मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए. जितना भी मैन्युफैक्चर के पास कंट्रोल रहे, वो पॉसिबल एक वो भी एक मेन चीज है इसमें रहे, तो ये सारी चीजें रख के होनी चाहिए, राइट? सो व्हेन यू से कंट्रोल, of course it means that you only control the inputs and the operation, you can't control the outcome. But कैसे है कि यहाँ पे हमारे साथ जो टाइप हमने जिसके साथ किया है मैन्युफैक्चर के साथ, दैट इज आर्बर इन्वेस्टमेंट्स. They have tried to figure out
what ways where they can mitigate the risk completely down to zero. Completely down to zero जब मैं कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप सबके मन में बहुत से सवाल होंगे. आई विल गो थ्रू दैट. हम इस आगे बढ़ते हुए ऑब्वियसली आप लोगों के सवाल के जवाब मिल जाएंगे. सो इन दिस केस arbor investments are at least in complete control of the operations so that they can modify or maneuver the output. Because when we invest, we always invest for exiting, right? And that is exactly what arbor did from an investor's perspective. So in real estate, I will start from the back, from the exit point of view, because that is exactly what is of interest to the investors. Now, most of them really will not understand the product completely. It is very important to tell them that they would know or they would like to hear and then go back to the risk that they would like to understand. इन्वेस्टर्स को भी प्रोडक्ट नहीं समझता. एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, एज एन आईएफए, एज एन वेल्थ मैनेजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट को समझने के लिए इस वक्त इसके साथ जो रिस्क जुड़े हैं और कैसे आर्बर इन्वेस्टमेंट्स उन रिस्क को टैकल कर रहा है ताकि वो जीरो हो सके रिस्क. ताकि क्योंकि एग्जिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज में. Now, in real estate, the only way where a investment can exit is organically or inorganically. Correct? दो ही वे होते हैं, inorganically या organically. वैसे ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई थर्ड वे नहीं है. Now, because it is an NCD, which is a non-convertible debenture, these debentures are in demat mode of the subscriber or the investor. The only way you can exit if the developer gives the money back. Developer पैसा देगा प्रोजेक्ट से, तभी इसमें से एग्जिट मिलेगा. करेक्ट. And to get the money back from any real estate residential project is to be able to expedite the sales without hampering any cover that we all normally have, right? So what Arbor recently did was they acquired a real estate mandate sales company, which is a listed firm called Justo. Justo एक उनकी उन्होंने एक acquire की है कंपनी, real estate mandate sales करती है ये कंपनी. They are an expert of selling real estate inventory on a mandate basis. When I say about mandate basis, they take the entire project and then sell it, right, and their clients are thousands and thousands of real estate brokers, and it's completely tech driven. They are more than 500 people in their company, and this company does close to 400 to 500 crore of sales every month, which means roughly 4,000 to 5,000 crores every year. And this gives the confidence to Arbor to that tomorrow when they invest in any residential project anywhere in the country, they do not have to depend on the developer's promise that they will give the money, they will get the money back from the developer. Very simple solution of no matter what you do, if the developer is whether a DLF or no DLF or really no name in the industry, कोई भी developer हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आर्बर को, क्योंकि जस्टो है वही सारा चीज आगे बेचेगा. Now, in this case, the only differentiator between a successful developer and a non-successful developer is whether he's able to sell the project properly and fairly and ethically correct. So that is exactly Arbor realizes that the biggest risk today in any residential project, and because Justo does 500 crore in any residential, 500 crore in a month, it is not difficult to believe on the fact that if Arbor is doing 100 crore investment, which normally has a tenure of 3 years, it will not be too difficult for them as with their own strength and without depending on the developer or the market forces. किसी भी डेवलपर या जो डेवलपर है उसके ऊपर या मार्केट जो दूसरी फोर्सेस हैं ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर आर्बर को डिपेंडेंट होना ही नहीं पड़ेगा एग्जिट के लिए. उनकी जो अक्वायर्ड कंपनी जस्टो वही सेल्स करके दे देगी इस प्रोजेक्ट का. और जो कंपनी 500 करोड़ महीने का सेल्स कर रही है वहां पे अगर आर्बर सिर्फ 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेस कर रहा है एनसीडी के थ्रू किसी प्रोजेक्ट में, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज भी. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट का कोई इशू नहीं आएगा. करेक्ट. सो बिकॉज सी normally if you put things in context, any developer or any NCD server issuer is promising you exit basis his own expertise. Okay, but in real estate developers, in real estate, what happens is that developers, even though they have sales team in real estate, the sales is only and only done by brokers. Very few developers have direct clients when they pick up the phone and then they reach out to people. More or less it's done majorly by real estate brokers in the past in couple of projects, even before the developer was in trouble, and now those projects are on auto mode when after Arbor investments entered in. So that is the first way of exiting organically. Now the other way, which also the industry uses,
इज टू एग्जिट इट इनऑर्गेनिकली। दूसरा एक वे है इनऑर्गेनिकली वहां से एग्जिट मिल सकती है, जहाँ पे जो एनसीडीज हैं उनके पोर्टफोलियो में जो काफी अच्छा कर रहे हैं, दे दे आर विच आर ऑलवेज सॉट आफ्टर बाय अदर इंस्टीट्यूशंस विच आर बैंक्स, एनबीएफसीज, अदर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो दूसरे जो बैंक्स, एनबीएफसीज या एआईएफ्स हैं, वो इनके एनसीडीज ले लेते हैं, because that is usually the case, because once Arbor enters the transaction, they cook them, they really nurture them well for the next 2 years. They become extremely bankable and they have a lot of institutions who are willing to take it away from Arbor's books. That is possible because they have created a very strong capital market team. So that is also team is able to reach out to all those institutional investors who are warm to investing in real estate. Now there is no third way of existing exit in real estate. Okay, developer may promise, but this promise is usually coming from the project only, because developer assuming that the project will have money from his own pocket is a very hypothetical scenario. Now it doesn't exist. It doesn't exist because many of this, all of this money are always blocked in projects. Now that Arbor has control of the exit, which means that the source of money is in their control right now. The next problem the next problem is the money need to be actually managed well so that they are not misutilized or underutilized by the developer in the project. Correct. That is the second risk Arbor controls. Arbor investors usually shy away from real estate because they believe that the developer is a crook and is going to default. हर बार इन्वेस्टर को यही लगता है कि मैं रियल एस्टेट में पैसा नहीं डालूं क्योंकि डेवलपर डिफॉल्ट करेगा, वो एक चोर है, वो डिफॉल्ट कर जाएगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम है रियल एस्टेट एनसीडी इंडस्ट्री में, बिकॉज मनी डजंट गो इन द प्रोजेक्ट। भले पैसा रियल डेवलपर के पास आता है बट वो प्रोजेक्ट में डालता नहीं है। मनी गोज इनटू डेवलपर पॉकेट, उसकी जेब में चले जाएगा पैसा। देयर इज अ लॉट ऑफ कैश एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज। देयर इज अ लॉट ऑफ व्हाट यू वांट टू से रिप्रेजेंटेशन डन बाय द डेवलपर। डेवलपर बहुत सारी चीजें गलत दिखा देगा कि ये हो गया वो हो गया और पैसा गायब। All of these things are actually operational issues and execution issues. What does Arbor has done in the this three four things is which is not normal in a which is not normal in a normal residency। कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन रियल एस्टेट एनसीडी निकाल रही है उसमें और आर्बर में यही फर्क है कि पहली चीज आर्बर जो है दे टेक 100% कंट्रोल ऑफ द अकाउंट्स। Many banks, NBFCs also do it, but they are abide by the RERA rules, which allow them to take control of only 70% of the money, which as per RERA allowed to go into the project. Arbor take 100% of the control of the money because they believe that the 30% which is actual, because which is usually allowed as per RERA for the promoter to use for operational reasons can also become a problem, because no project usually have more than has 30% मार्जिन। 30% मार्जिन अगर होगा वहां उसके बाद में भी 30% पैसा गया, डेवलपर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है इसको फिनिश करने के लिए प्रोजेक्ट को। डेवलपर दे रेज देयर हैंड एंड से दैट दे आर लीडिंग टू एनपीए, नॉन प्रॉफिट एनपीए की तरफ लीड हो जाएगा। बहुत सारे हेयरकट्स होंगे और हमने भी देखा है और आर्बर ने भी ये उनके एक्सपीरियंस से देखा है कि इंस्टीट्यूशन उन्होंने हेयरकट, दे टेक हेयरकट बिकॉज डेवलपर नो एग्जैक्टली हाउ द इंस्टीट्यूशन वर्क। Arbor went ahead and moved away from this particular way of working. The source of money is in their control. It comes into an escrow account which they will control 100%. There is no signing authority to the developer at all. Second thing which they did is not done by any institution, is that tomorrow let's say the developer does something, default or juggling anything, और उनको कोर्ट जाना पड़े, वी गो टू द कोर्ट, मतलब दे गो टू द कोर्ट and win, they arbor win through NCD surface or mortgage enforcement, all of that. But let's say obviously they win in the court at the end of the day. But if you can, and whatever you get you distribute among your investors, जो भी पैसा आएगा वो इन्वेस्टर्स में बांटा जाएगा। देखा है आर्बर ने भी और हमने भी कि वी हैव सीन द एंटायर इंडस्ट्री फंक्शन लाइक दिस। वी हैव सीन दैट द डेवलपर्स ब्रिंग द इंस्टीट्यूशन डाउन ऑन देयर नीज फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, not a theoretical point of view. So practical point of view, pledge is a document which you have to enforce in the court, which takes a lot of time. But Arbor realizes that mandate pre-approved power of attorney, so they realize why they can't do the same thing here. Exactly, they did the same thing. उन्होंने डेवलपर का जो डीमैट है उसको अपना इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके अपनी उसकी जो कंपनी है जहां पे प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है उसको डीमैट पावर में वहां पे पूरी 100% पावर ऑफ अटर्नी ले ली है। How this helps in tomorrow, let's say if Arbor sees a default coming in the next 3, 6, 9 or 12 months, they don't have to wait for enforcement. They can take control of the entire company by transferring the shares using the power of attorney to a custodian,
and take control of the operations or operations control. They can continue the project just long enough for the sales team to sell it really, really fast and take the investors' money out, right? So thankfully Arbor has never got any opportunity or reason to enforce this particularly option because they really work with the in a way that developer does not cannot default, and they have lawyers, investors, contractors. They have built a community of that. So first thing is control of escrow account 100%. Second is control of the SPV 100%. Third thing, क्या एक टेक्निकल एक्सपर्टीज है रन करने के लिए प्रोजेक्ट को, बिकॉज बैंक्स, एनबीएफसीज और फंड्स, दे इफ द प्रोजेक्ट इज टाइम्ड एज अ डिफॉल्ट, यू डोंट गेट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. If because developer, he's going to give you pennies to the dollar, right? So that's when Arbor realized that to need to have their own technical expertise also in house to able to continue the construction. कल को डेवलपर नहीं करता है, अगर डिफॉल्ट करता है, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, तो भी इनकी एक कंपनी जो है जहां पे इन्होंने टाई अप किया है वो डेवलपमेंट आगे कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करेगी. That is where Arbor started their own development management entity. And using this development management entity, they created a fantastic network of contractors, developers who have an understanding with what they will come and partner with Arbor at cost or very nominal cost, plus basis and continue the construction, because now the company is already in their control because power of attorney and because all of that. The assumption here, and that's why Arbor just need to ensure that the project is up and running, visible, that it is functional, and they sell enough inventory, just enough to get their principal and the promised interest back. After that, they are willing to hand over the project back to the developer. Now, this integrated approach, where the first part of construction, second part of money, providing the money and ensuring that there is financial closure, and the third part of sales, which is the exit. Now, the USP, integrated development capital to the consumer or the buyer, when you're controlling this immensely as the capability to control the exit. Now, if you see all the institution today, if you monitor, they manage the transactions into Excel sheets. Even today, the entire finance industry uses Excel sheet. हर कोई एक्सेल शीट ही यूज कर रहा है फाइनेंस इंडस्ट्री में, बैंक में, एएमसीज में, इंस्टीट्यूशंस में, सब जगह. बट बहुत कम लोग हैं, वेरी फ्यू पीपल हैव बीन एबल टू रियलाइज द रिस्क बिहाइंड using Excel sheet. Because the problem here is Excel sheet is only good as the person who is handling them, who is handling the same. And in this case, both the person who is managing the Excel sheet plus the Excel sheet itself, both of them are corruptible. दोनों करप्ट हो सकते हैं. बिकॉज क्या होता है ना, डेवलपर कहेगा, दे से दैट यू आर अज्यूमिंग यू टू बी 100% इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, विच मीन्स यू नीड टू बी कंट्रोल. बट इसमें क्या होगा ना, आंसर क्या होगा, डेटा शीट में होगा, एक्सेल शीट में होगा. जहां पे एक्सेल शीट या फिर जो पर्सन उस पर काम कर रहा था या जो एनालिस्ट काम कर रहा था, वो अपने इंट्यूशन लगाता है, एक्सपर्टीज लगाता है टू कंक्लूड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी को आगे दे देता है. बट बेसिस दैट एंड द इंट्यूशन, दे गो अहेड एंड अप्रूव द ट्रांजेक्शन, डेटा फर्स्ट, which usually is from the developer, because so the data is in Excel sheet. कोई भी फॉल्सिफाई कर लेगा उसे, और उसमें कुछ भी आगे हो सकता है. सो व्हाट आर्बर डिड इज दिस, उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया इसमें, एनर्जी स्पेंड करी एक टेक प्लेटफॉर्म बनाने में. उन्होंने एक सीटीओ हायर किया जो इन्फोसिस के को फाउंडिंग मेंबर थे, राइट. उन्होंने जो भी चीजें थी इनके दिमाग में, जो ये एक्सेल शीट में, पेपर वर्क में, जो भी फॉल्सिफाई हो सकता था या गड़बड़ हो सकती थी, सब कुछ उन्होंने लेके एक पास्ट एक्सपीरियंस को लेके कोडेड टेक प्लेटफॉर्म बनाया. यहाँ पे इन्वेस्टर आज की तारीख में या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी पार्टनर लॉग इन कर सकता है. कोई भी जो कंस्ट्रक्शन में पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है थ्रू रियल एंटिटी, दे कैन लॉग इन, कितना मनी प्रोजेक्ट में गया है, प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है, विच अप्रूवल इज नीडेड, हाउ मेनी अप्रूवल्स ही हैज टेकन, हाउ मच टाइम इट विल टेक, सारी चीजें, कॉस्टिंग है एक एक यूनिट की, कितने में कितना यूनिट सेल हुआ है, सारा कुछ वहां पे दिखेगा. सो देर इज, इट कैनॉट बी मैनिपुलेटेड, इट इज ऑल द थिंग्स आर टेक ड्रिवन. एंड बिकॉज ऑफ दैट 95% errors have been improved very drastically. 90% एरर्स ऑलरेडी इंप्रूव हो चुके हैं. नाउ एवरी मंथ, इसके बाद और भी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए. तो एवरी मंथ आर्बर हैज देयर पीएमसी, which is the consultants. They be on the ground, they fetch the data from the project, verifies them. Their CA system data cannot be fudged.
सो देन एग्जैक्टली कि कब डिफॉल्ट आएगा, अगर डिफॉल्ट आने वाला है तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है। सेल्स मैकेनिज्म है, सेकेंडरी सेल्स है, प्राइमरी सेल्स वो हैंडल कर रहे हैं जस्टो के थ्रू। तो उन्हें पता है कि क्या आने वाला है और कैसे पैसा इसमें से निकालना है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल फोर पिलर्स विच आई हैव explained you, they have been able to manage the exit when they want for their investors, and being able to control the escrow account of the developer, being able to control the construction through a four tech platform expertise. Right now they have become allies or friends of anyone of anyone who thinks of real estate. So developer discipline, so that they behave like a triple A developer. Investors, all of this is available with their peace of mind. They know exactly what is happening on a daily basis. There is 100% transparency on their platform because everything is shared with them, with the investors, as in investors is the larger one, or institutional investors who are willing to invest a lot of money. यहाँ पे बहुत सारी गवर्नेंस है। उन्होंने बहुत सारी गवर्नेंस खुद के सिस्टम से रखी है, उनका खुद का टैक्स सिस्टम है, उनका खुद का एक सिस्टम है जिसे वो एम्स कहते हैं, आर्बर इन्वेस्टमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू ये सारी चीज मैनेज होती है। अब इसमें लीगल चेक भी जरूरी है। एक और चीज है जो लीगल चेक है। लीगल चेक, उनके एक पार्टनर है खैतान एंड कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ फर्म इन द कंट्री with more than 1600 lawyers across the country. So they do a technical due diligence so much with the developer that they get into the head of developer, developer के दिमाग में घुस के उसके जो भी चीजें हैं, the developer will not be able to hide only any technical or due diligence. So that is how they get it out from the developer. So all this financial diligence, due diligence, technical due diligence, legal technical due diligence have been done by the arbor. That is how they are able to control each and everything from start, from the exit, from the sales point of view, from the escrow account from the developer, the demat account of the developer, everything they are into control of them. So these technical agencies, the technical due diligence, they have partnered with the best of the country, top five technical agencies in the country, which are used by CUCs and the SDFCs and major institution. So all these things, and then they do the financial analysis also. So this is how they manage the real estate NCD in this case. Now, this is a small, differentiator between Arbor structured NCDs, which have been giving 17 to 18 yield per annum, percentage per annum. They are having a risk level of moderately high and in comparison to different products. When I speak about A-rated coupon bonds or government sovereign bonds or triple B rated bonds, still real estate NCD of Arbor has been beating them. Till today date, they have been able to give 13 exits till now. They are having a 14th exit, which will be exiting in the month of August this year. So there is no default in this case. 100% they have done this. Now, this is the streamlined asset management where they have regular meetings with the developer team. They promotes the understanding the sync and the strategic and tactical decisions of the developer. Site visits and market mapping have been done. That what is the competitor mapping doing? Micro market studies are done by the team. Continuous project tracking. एक एक ब्लॉक लग रहा है, एक एक फ्लैट बिक रहा है, हर चीज की जानकारी आर्बर रखता है अपने पास में और इन्वेस्टर्स को देता है ऑनलाइन अपने पोर्टल के थ्रू। जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। एक्सटर्नल ऑडिट, एजेंसी ऑडिट्स, बाहर से एजेंसीज, जैसे मैंने कहा कि जो एच डी एफ सीज, ब्लैक स्टोन्स और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन के ऑडिट्स करते हैं, उनसे वो ऑडिट करवाते हैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट वगैरह के जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिसबर्समेंट प्रोसेस पूरा कंट्रोल रखते हैं, एस्क्रो अकाउंट के थ्रू रिकरिंग बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलेशन होते हैं डेवलपर के। जो भी अप्रूवल है वो आर्बर ही देता है, पेमेंट यहाँ से वहां करने के लिए डेवलपर के वेंडर्स को या जिसको भी। तो वो सारी चीजें कंट्रोल में है उनके, दे हैव दैट कंट्रोल। बजट वर्थ एक्चुअल ट्रैकिंग, रियल टाइम बिजनेस प्लान मॉनिटरिंग। आज सेल्स आज कुछ सेल्स ऐसे करनी है जस्टो को, कल वैसे करनी है, एनओसीज लगेंगी, कॉस्ट लगेंगी, जो भी बजट है सेल्स का या ट्रैकिंग का बिजनेस के, वो सारा आर्बर देखता है उस प्रोजेक्ट का। एंड एक्टिव डिविएशन मॉनिटरिंग, ऐसे मतलब जो भी उसके एक्टिव मॉनिटरिंग है बाय आर्बर फॉर द प्रोजेक्ट विच दे आर टेकन इनटू। So I believe I have done with the product. For this also, I'll take up the questions. I can see there are some questions. Okay, so Mr. Sekhar has asked one question, which is, I saw such unfinished building in Noida Sector 16 for many years, 5 years ago. Does the investment would help in completing the building subject to all legal clearances?
So in this case, I guess Arbor can get in touch with them. I don't know because Arbor generally don't go upfrontly to all the developers. They check many things with the developer and then only they sign up with them. Is this product real estate NCD meant for retail investors? I think CAT 2 have exists for similar real estate projects offered by well-known investment industry. Yes, real estate NCD are meant for retail investors. The minimum investment for this is minimum 10 lakh rupees. So yes, HNI and retail investors who are willing to invest 10 lakh rupees, they can invest into these products. So I believe I have completed the questions. Attendees, you can go with the questions if you have any, or in post this, I'll move to the platform because we have because whoever have attended to this session, we'll be giving you some handouts. Plus, if you are a IFANOW user, you can access those handouts in the next week from your IFANOW platform directly. If you are new to IFANOW, you can sign up to IFANOW. Even we'll be giving you some handouts which you can use. So I'll just share my screen and show you the handouts which are there. Let me share my screen. I believe there are no questions. So I'll move ahead with the rest of the presentation left. Okay, so my screen is visible, right? Yes. So if you're a IFNOW user, what we have built for you, we have built some reports which would be live in the next week for you. So let's say as your this was session of fixed income products, where we were talking about traditional fixed income products, what are the problems with them, let's say FDs, bonds, or real estate, or sorry, debt mutual funds, which are giving generally low returns in comparison to other new age fixed income products, which is invoice discounting, insurance buyout, and real estate NCD. We have created some reports. Let me give you an example. Let's say you have this is a report where you can check your clients which are having age of 50 years plus and they are not having any debt holding. This report will show you the list of investors who are above 50 years and they do not have a single holding under debt. So they are only equity investors or a hybrid investor, majorly into equity itself. So for those investors, you can reach out to them and you can take out the report from the platform. You can reach out to them and you can pitch them these in fixed income products, the new age fixed income products which are generating more than the traditional ones. So you can pitch them accordingly. Second one also, which has debt mutual fund portfolio concentration analysis. Now, this report shows you from a group head wise for the investors who are having investment into a very less number of schemes or a more number of schemes. So let's say if I speak about here, I'll give you an example from this data. Now, this investor is having 6,10,369 only, the current value, but the number of schemes which you can see is 24. Why 24 is needed for a less amount, for such a less amount? So you can inform that customer to reduce the debt mutual funds and accordingly they can invest into the traditional fixed income products. You can see now this is a customer who has investment of let's say 3 crore 30 lakh 40,000 where there are only 11 schemes. So you can check whether the schemes are performing, whether one or two schemes are dominating the portfolio of debt also. Then we have another report which is ELSS lock-in ending soon. So ELSS lock-in has 3 years of lock-in. Now I can understand there would be SIP also in this. So we have created this report keeping in mind that once a holding days, the holding days is between 1030 days and 1080 days. So you can pitch them that your ELSS lock-in is ending soon. And in that case, you can switch to a debt category, a fixed income category, which is giving a good returns in terms of other debt products. Then you have, if you have uploaded your data of life clients, life insurance or FDs, under reports, you can get the maturities and renewals also. So let's say if you want to check as an advisor that for the next 30 days or for the next 7 days, which customers fixed deposit or insurance going to mature, or let's say which insurance going to renew, you can approach them, you can speak about with them because I believe life insurance is not a tool for investment.
It is a tool for life insurance cover. So if your customer has more than one life insurance or two life insurance, which is not really needed to them really, in that case you can switch that those life insurance policies which are going to renew mature in this the next 30 days or 10 days. You can get them to reinvest into the other fixed income products. Similarly, we will be handing out, so who are not the let's say who have not IFNOW users, we will be sharing with you post this webinar in the next week itself probably. We'll be sharing you with this Excel tracker which we have built, which our experts have built for you. Directly you can use this. We have mentioned the trigger use cases for this. Whatever platform you use, whatever data you have of your clients, you can directly check whether the trigger use case is higher debt allocation. Condition is that debt allocation has to be more than 40 to 50% of the portfolio. You can reach out. Why reach out? Because suboptimal returns they will be generating, improve yield without changing risk. And what is the suggested action? So you can follow these steps also. You can follow this tracker. It will help you in generating a good business. Because one more thing which is there as an advisor, what I feel, which I should inform you, that I have seen that debt mutual fund or these products, the traditional fixed income products, they, as an advisor, they give you less payout. But with this new age fixed income products, you will be able to earn more. Yes, we can discuss this offline. You'll be receiving the call from my business development team in the next week. There you can speak about it for in detail. So you'll get an idea that how these products are changing game for the investors plus for your advisory also. Now we will give you we will as we promised in our communication, we'll be giving you more handouts. So these are some email templates which we have built for you. We'll be giving you out this also. We have built WhatsApp templates also which we will be handing out to you post this webinar. So this will help you to reach more and more customers, to start a conversation. And one thing I really need to inform you, do not directly introduce a product. Do not say that I have a great product like insurance buyout or invoice discounting or in real estate NCD. Ask them questions. Ask them that whether how is their performance, how is their portfolio performing, what is the data. So you can do data mining using the IFANOW platform. As I said, there are many multiple reports into this. You can do that mining and then you can approach them with this. We'll be giving you out. We have built a FAQ sheet also. This FAQ sheet also will be handing out to you if you are not IFNOW user. If you are an IFNOW user, we have inbuilt this into our platform itself, where you can go to the Growth Plus section. Under Growth Plus section, you can go to the products. Over here, you have fixed income category, which shows fixed deposit, bonds, insurance buyout, real estate NCD, invoice discounting. You can go, let's say, insurance buyout. You get all the details of insurance buyout over here. Let's say if you want to check this product is for which ideal investors, you can go to ideal investors. You can see that this product is fixed. You can pitch it to fixed income category where investors require a regular income. Client segment is mass affluent, HNI, ultra HNI. Risk profile is conservative for the customer. Investment horizon is medium term, long term. So accordingly, this product can be pitched to those customers. Why recommend this to your customers? You can see this is the differentiators that you can inform to your customers. Now as a sales toolkit, we have put uh, decks, PPTs, one pagers, write-ups for the products. You can directly download these with your logo, with your name, with your details. Even you can change the color code of this as per your brand logo and everything. We have put FAQs also into this of the products which will help you answer to the questions of the customers. So there are many tools what IFNOW has built for the advisor community. If you're an IFNOW user, you can use those tools. If you're not, still will help you out with some tools. And if you want in your branding and everything, you can connect with a business development team and they will help you out with this. Okay, Mr. Dinesh has asked some question, which is, do you have any ready-made project in this category to offer? So once any new project comes for a real estate NCD offering, our team will get in touch with you. So in that case, we'll inform you about the inventory. One more thing, if you're a IFNOW user, I just wanted to show one more thing to you.
You must have seen obviously in your IFANOW login, you can my panel login, but still I feel I should show you this again. So whenever you log in at whatever time of the day, this is your dashboard. You see every updates which is there by IFANOW here. So if there is any new product launched, you can see the product, you can see the details, you can get a call back, or you can connect with your RM of Growth Plus. So every product launch, every product, new product which is coming, the inventory is shared over here. There are multiple things shared over here. You can get the details from here also. Plus, you will be once you empanel in Growth Plus, you will be assigned a Growth Plus RM separately, who will help you out with the journey of Growth Plus and the investments. So Atlas asks how to give read only login to my clients. Okay, yeah. So I believe I've answered the question. Okay, so one of the IFAs is Growth Plus separate offering. Growth Plus is a separate vertical which IFA now has started for the alternates. So let's say you're a mutual fund distributor. That mutual fund business you can continue under your code only because we do not have any ARN. Uh, we have started Growth Plus as a separate vertical for IFA community because in the past 1 year we had done some research because as I said, one of our co-founder Mr. Sonesh is a practicing RIA himself. We have a separate community of IFAs where we found we by the research that when an MFD or an IFA wants to do business into other offerings, into other products apart from mutual fund, they have to do separate tie-up with separate manufacturers. They would have to go to hassle of different payouts, different RMs, and different processes. To cut those all those things, we have brought Growth Plus, where directly you can do empowerment with IFA now, and you can get you will be tied up with 17 plus products across 30 plus manufacturers. You'll be getting access to all those things where you will be getting only one RM for Growth Plus who will be helping you out with the sales toolkit, with the product information. You can attend the webinars, product webinars, the demos. You can take one-to-one calls with the product experts, and accordingly. So this is how Growth Plus is into effect. Okay, Mr. Atlas, you'll be receiving a call in the next week itself by my business development team. They will be helping you out with this. Yes, Mr. Shekhar, you can we can take this offline. You can connect with your RM and we'll be happy to help with you with any of your doubts. So let's say if any of one of you attendees have left with a doubt or you have any question answer which you come up basically post this webinar also, you can get in touch with my team. They will be happy to help you out with any of your questions. So thank you everyone. Thank you for attending today's webinar. It was lovely. I can see now your all, fixed income was a boost today. So I can feel that yes, it will go through. Thank you everyone.